Hello and welcome everyone. We are here with a new episode of NLU Calling, and we'll be discussing law of contracts today. So, how you all have been? जल्दी जल्दी बताओ कैसे हो सब लोग फटाफट से. Am I perfectly visible, perfectly audible? Do let me know that as well. Okay. Okay, let's start. The first question that we are going to cover today is somewhere related to an excerpt that came in business today, and we'll be doing that. So I'll be reading the question, and then we'll be doing the questions as well. Let's read the paragraph really well and really carefully. तो हम अच्छे से पैराग्राफ करेंगे पहले, उसके बाद we'll see कि हम क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर करने का बेसिक फंडा, यू शुड नो दैट most of the things are actually written in the passage, and then we'll be seeing. ठीक है, that will be a fact based thing. Okay. So the question today is on COVID-19 pandemic, and when we are going to do this question, there are few major things. इस question में force majeure and material adverse effect. These are the two things जो इस question में काफी ज़्यादा important है और इससे related questions हम आगे करेंगे. ठीक है? So the COVID-19 pandemic has taken the entire world hostage in less than 4 months. Okay, and the global economy has been hit the hardest, with governments across the globe implementing stringent policies, including lockdown, to control the coronavirus outbreak. The pandemic today presents unprecedented challenges and impediments to business in conducting their normal operations. जरूरी नहीं होता कि हर एक स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में रियली इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, बट यस हमको एक बार स्किम रीडिंग कर लेनी चाहिए. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज लर्न. The pandemic today has caused delays in the performance of contracts and transactions. Okay, because of pandemic, there is a lot of delay in contracts and transaction happening. Now, the question that arises is whether the current situation can enable parties to a contract to alter their obligations with non-compliance of terms, neither being regarded as a default committed by any party nor a breach of contract. There are certain well-accepted practices for dealing with such extraordinary situations in commercial transactions by the inclusion of force majeure and material adverse effect clauses. So यहाँ पे they are talking about two of the things जिसके through जितने भी हमारे contracts थे जो डील नहीं हो पा रहे थे while there was COVID-19, उनको कैसे डील करना है. There were two major things, force majeure and material adverse effect. Determination of the types of circumstances so covered by the force majeure clause contained in a contract is essential. जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो और आपको पता है कि कहीं ना कहीं these two things are really important, वहीं पे आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, so underline force majeure, material adverse effect, and what is going to happen? Determination of the types of circumstances so covered by the force majeure clause contained in the contract is essential. So किसके essentials होने चाहिए? Force majeure के essentials तो contained होने ही चाहिए contract में. Provisions of force majeure often cover natural disasters like hurricanes, floods, earthquakes as act of God. So what is actually a force majeure covering? Force majeure is actually covering all the acts of God. मतलब क्या क्या आ जाएगा उसमें? हरिकेन्स आ जाएंगे, फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड आ जाएगा. तो these are the things जो force majeure के कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगी. Other covered events may include war, terrorism, civil disorder, fire, disease, medical epidemics, or by reason of applicable laws of or regulations. तो ये next उसमें आ जाएगा कि these are all the things will also be covered. तो इसको भी आप underline करोगे अच्छे से. Then you go ahead. Other covered, broadly the courts have interpreted the term force majeure as an event that can neither be anticipated nor controlled by either of the contracting parties. फोर्स मेजोर के जितने भी इवेंट्स होंगे ना तो कंपनी उसको देख पाएगी ना तो पार्टीज देख पाएंगी while those things are happening. तो मेक श्योर मतलब यहाँ पे मेक श्योर दिस थिंग इज अंडरलाइन, क्योंकि हमारा बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट करेगा while we are going to have our questions assigned. A force majeure clause applies in the context of ongoing contractual arrangements, whereas
MAE or material adverse change clause applies to the allocation of risk in the transactions before their closure or completion. सो दीज आर द टू थिंग्स कि पहले तो कि फोर्स मेजर किस में काम करेगा और एमई किस में काम करेगा. अगेन यहाँ पे किस किस चीज में कौन कौन सी चीजें काम करेंगी, दे हैव रिटन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली कि फोर्स मेजर क्लॉज अप्लाइज टू द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन. जो ऑनगोइंग चल रहे होंगे उनमें फोर्स मेजर इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. एमई और या मटेरियल एडवर्स इफेक्ट क्लॉज अप्लाइज टू एलोकेशन ऑफ रिस्क इन ट्रांजैक्शन. सो जहां पे भी रिस्क इन ट्रांजैक्शंस होंगे वहां पे एमई इज गोइंग टू बी अप्लाइड. Pandemic and related consequence, such as government action, is a type of event covered by a force majeure clause. However, its impact on the affected parties' ability to perform its contractual obligation may vary depending upon contractual terms. ठीक है, तो पैंडेमिक रिलेटेड जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे, ये टाइप ऑफ इवेंट्स होंगे, वो कहाँ पे कवर होंगे, फोर्स मेजर में कवर होंगे, राइट. It is common for force majeure clause to specify the impact that the event or circumstances in question must have in order for the clause to be triggered. References may be made, for example, to the event or circumstances having prevented, hindered, or delayed performance. These terms require different levels of impact on performance before a party can claim recourse to these clauses. In other words, the force majeure and MAC clause act as an exception to what would otherwise be treated as a breach of contract. तो मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कोविड के टाइम बन रहे थे उनके अंदर दो चीजें एप्लीकेबल हो रही थी, फोर्स मेजर और एमई. फोर्स मेजर और एमई का मतलब ये उन्होंने कर दिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े ना. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर आर 5 एसेंशियल्स, फटाफट से कमेंट करके बताओ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो व्हाट आर 5 एसेंशियल्स जो व्हिच आर रियली 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 नीडेड व्हाइल यू आर कवरिंग योर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो इसलिए हमने फोर्स मेजर और एमएससी का क्लॉज लगाया है. सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट दैट इफ अ फोर्स मेजर क्लॉज इज अप्लाई द कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेटेड. कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जहां पे ये लिखा था कि अगर फोर्स मेजर को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होने वाले हैं. On the other hand, some contracts may even state that the duty to fulfill the contractual obligation may be suspended for a certain period of time, and if the force majeure event is not curbed or treated even after such time, then eventually the contract may be terminated. तो इन्होंने एक टाइमलाइन दे दी, तो दिस इज लाइक वहां पे तुम लिख सकते हो दिस इज अ टाइमलाइन गिवन. Though there cannot be a one-size-fits-all solution to this question, and it depends upon how the force majeure clause is worded in a specific contract, and in the absence of the same, applicable laws related to the same will be required to be taken into consideration. ठीक है, now we'll be covering first question. The first question says, based on the author's argument in a passage above, which of the following is correct? तो उन्होंने हमको questions उठा के directly passages में पूछा. The first is force majeure clause generally have a uniform impact on the performance of contract in all the cases. The impact on the performance of contracts by the usage of force majeure clause is dependent upon the way such clause has been constructed in a particular contract. Both force majeure and material adverse change clause have similar impact on the performance of contracts. All of the above. जब हम पढ़ रहे थे, while we were reading the passage, what were the things that were there? कि force majeure किस किस में का applicable होगा? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग. सो यस, जब हम हमारा पूरा पैसेज पढ़ रहे थे तो यस उन्होंने बोला कि फोर्स मेजर वुड बी इम्पैक्टफुल. यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल होगा, और उन्होंने ये भी बोला था कि certain contracts may state that if a force majeure clause is applied, the contracts may automatically be terminated. So then that first statement is not going to be applicable for us. जो हमको first statement दी है वो applicable नहीं होगी. Second statement, the impact on the performance of contract by the usage of force majeure clause is dependent upon the way such clauses have been constructed in a particular contract. तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्या हमारे पैराग्राफ में इट्स गिवन कि अगर फोर्स मेजर कहीं से भी कहीं तक होता है तो इसका इम्पैक्ट होगा. तो यस, दे हैव प्रोवाइडेड हियर references made for example of the event of circumstance having prevented, hindered, or delayed performance. So it is common for force majeure clause to specify the impact that the event or circumstances in question must have in order for the clause to be triggered. So yes, the second B is going to be one of the
pointers, that is going to be correct. Third pointer भी देख लेते हैं. Both force majeure and material adverse change clause have similar impact on the performance of the contract. क्या हमारे उसमें लिखा है कि similar performance होगा? नहीं. They would be applicable, but they won't have the similar performance as such. तो what would be the answer? The answer is going to be B for first question. क्योंकि all of the above नहीं हो सकता. First and third is not applicable at all. The second question is, imagine there is a domestic commercial contract for supply of certain goods for certain price between A and B. So they are saying कि suppose करो कि commercial contract बनता है between A and B, कुछ goods suppose वो लोग apples बेच रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो किसी ने एप्पल दिया और उसने उसका प्राइस दिया, तो ए बिटवीन ए एंड बी उनके अंदर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. However, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure event in the contractual document. Does not contain the force majeure clause. In such a situation, what would be the fate of the contract in the event like that of the COVID-19? अगर कोविड-19 में कॉन्ट्रैक्ट बना था और हम फोर्स मेजोर और कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट दोनों ही करना भूल गए व्हाइल वी वर मेकिंग द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, तो और कोविड का टाइम है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? As the parties did not negotiate on the force majeure clause, either of them cannot take an exception up to the breach of contract. क्या ये होगा? द पार्टीज कैन इन्वोक द मटीरियल एडवर्स चेंज क्लॉज. नहीं, पार्टीज भी इन्वोक नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने साइन ही नहीं किया है. एज द पार्टीज डिड नॉट नेगोशिएट द फोर्स मेजर क्लॉज, ईदर ऑफ देम कैन नॉट टेक अ एक्सेप्शन टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, दैट इज somewhere the other, that is going to be true, but then let's see other options as well. In the absence of such clause in the contract, the court may resort to the applicable law, that is the Indian Contract Act 1872, to give relief to the parties. Now when you see कि यहाँ पे दो options में बहुत ज्यादा confusion हो रहा है कि A भी सही बोल रहा है बट सी भी सही ही बोल रहा है, राइट? तो विच वन यू आर गोइंग टू अप्लाई इज जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कहीं ना कहीं हमारे पैसेज से रिलेटेड सारी चीजें हो, सारी चीजें कवर हो जाए. या अगर ये प्रिंसिपल और फैक्ट वाला क्वेश्चन बेस्ड होता तो वहां पे हम मानते कि हम प्रिंसिपल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा क्लोज पहुंच पाए, बट यहाँ पे वी डोंट हैव अ प्रिंसिपल, वी ओनली हैव अ पैसेज टू गो फॉर. सो यस, व्हाट वी आर गोइंग टू चूज? वी आर गोइंग टू चूज सी एज एन ऑप्शन, क्योंकि हमारे उस पूरे पैसेज में जब हम पैसेज रीड करेंगे तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाँ, तो यस, जब हम पैसेज रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग इट, एंड द एब्सेंस ऑफ सच क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट्स में रिजॉर्ट टू द एप्लीकेबल लॉ, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टू गिव रिलीफ टू द पार्टीज, व्हिच इज सिमिलर समवेयर रिटन इन द पैसेज एज वेल. तो कहीं ना कहीं ए या सी में से वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर सी एज एन ऑप्शन. Next, in the same fact situation as mentioned above, with a modification that there is a force majeure clause in the contract between A and B. मतलब अगर हम सेम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट उन दोनों ने साइन कर लिया फोर्स मेजोर और एमए को. Let us suppose that B, who was to supply goods to A on a certain date and time, faced issues in relation to procurement of goods due to mill strike and also change of rise in prices of the goods. In this case, can B claim the suspension of performance of contract on the basis of force majeure? फटाफट से आंसर बताओ, व्हाट वुड बी द आंसर? Yes, we can, depending upon the way the force majeure clause is worded, which option is not at all relevant. Such situations cannot be covered under force majeure, as it is just a case of disappointed expectations, and hence B cannot invoke the clause. It is merely a case of commercial hardship.
B can invoke the force majeure clause as clauses too broad to cover such situations. Is it too broad to cover the situations? No. Is it B as an option? Everybody is saying B. Why it would be B? क्योंकि देर वॉज सर्टनली क्लियरली रिटन कि हमारे जो कोड्स हैं वो क्या करते हैं, दे डोंट एक्चुअली एक्सेप्ट द कमर्शियल हार्डशिप एट ऑल एज फोर्स मेजोर अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सच सिचुएशंस। अगर कोर्ट इंक्लूड कर रहा होता ऐसी सिचुएशंस और ये बिजनेस रिस्क के खिलाफ नहीं होते तो यस वी वुड हैव एक्सेप्टेड इट। ठीक है, तो we'll be choosing B as an option. What is the question number 4? Typically, the MAE, material adverse change provision in an agreement contemplates events which, if they occur or are likely occur, would have material adverse change or effect on the assets, business, properties, liabilities, financial conditions, results, operation of the target, or that affects the ability of the transenting parties to consummate the transactions or the validity of enforceability of the transaction parties to its rights and remedies under the transaction documents. Which of the following sample clause in a contract resembles as SMAE clause? In the event either party is unable to perform its obligations and the terms of this agreement because of act of God, क्या act of God आता था MAE में, act of God तो force majeure में आता था, तो ये तो नहीं होने वाला है। Except with respect to payment obligations under this agreement, no party shall be liable for, nor such party shall be considered in breach of this agreement due to or any failure performance and obligation agreement results in the क्या बी होता ऑप्शन? अग्रीमेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ रिजल्ट कॉज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल इंक्लूडिंग अर्थक्वेक लेबर प्रॉब्लम, नहीं। ना तो लेबर प्रॉब्लम अर्थक्वेक इज अ प्रॉब्लम ऑफ फोर्स मेजोर, नहीं। इज इट द प्रॉब्लम एक्ट ऑफ गॉड इज अ प्रॉब्लम ऑफ सॉरी मटेरियल एडवर्स चेंज, नहीं। ये दोनों तो फोर्स मेजोर के हैं, तो बोथ ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। व्हाट इज गोइंग टू बी मार्क्ड? नन ऑफ द अबव। Next, so the Contract Act 1872 deals with contract law in India, its rights, duties, and exceptions arising out of it. Section 2H of the Act gives us the definition of the contract, which is simply an agreement enforceable by law. So, 2H define करता है agreement को, so agreement to contract. So, any agreement which is enforceable as enforceable by law is going to be contract, is written in section 2H. That is what our first statement is saying. To understand the difference between void agreements and voidable contracts, it is important to talk about sections 2H, 2A, 2I, 2D, 14, 16, 3 and 15, 24 to 28 of the Indian Contract Act. Void agreements are fundamentally invalid, making them unenforceable by default. These agreements cannot be fulfilled as they consist of illegal elements. तो कैसे वो क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं illegal elements होते हैं. They cannot be enforced even after subjecting it to the both parties. अगर दोनों parties भी subjecting में हैं तो भी हम उसको enforceable नहीं कर पाएंगे. However, in the case of voidable contract, the agreement is initially enforceable but is later on denied at the option of either of the parties due to various reasons. अगर voidable है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ऑफ वन पार्टी के ऊपर या दोनों पार्टीज के ऊपर वी कैन डिनाई द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। अनलेस रिजेक्टेड बाय पार्टी दिस कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड और एनफोर्सेबल। अगर कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। द पार्टी हु इज एट द डिसएडवांटेज ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस applicable to the contract has the ability to render the agreement void. void agreement is void ab initio. अगर कोई void agreement है तो वो तो पहले से ही void है, उसको हम बाद में enforceable ही नहीं करा सकते। void ab initio है, on the face of it it's void, making it impossible to rectify any defects in it, while voidable contracts can be rectified. voidable contracts जितने भी हैं उनको हम rectify तो कहीं ना कहीं कर ही सकते हैं। In case of void agreements, neither of the parties is subject to any compensation for any losses, but voidable contracts have some remedies. A valid agreement forms a contract that may again in either valid or voidable. The primary difference between a void agreement and voidable contract is that a void agreement cannot be converted into a contract. So, अगर void agreement है and voidable contract है, is that a void agreement cannot be converted into contract. Void agreement कभी हम convert कर ही नहीं सकते into contract. So the first question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वॉइड अग्रीमेंट? हमने हमने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, हमने वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है हमारा पैसेज कि एन एग्रीमेंट दैट इज वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय अ कोर्ट, नहीं, दैट इज एन वॉइडेबल एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट दैट हैज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज टू void ab initio है, तो बी कहीं ना कहीं इज करेक्ट आंसर। एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली एनफोर्सेबल, नहीं। एन एग्रीमेंट दैट कैन बी एनफोर्स्ड इफ वन पार्टी चूजेस टू डू सो, नहीं। सो ना ए चल रहा है ना सी चल रहा है ना डी चल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट आंसर। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू रॉब अ बैंक एंड शेयर द प्रोसीड्स इक्वली कैन बी टर्म्ड एज, whether it would be a void contract or a voidable contract. फटाफट give me an answer. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट? द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज एक्चुअली व्हाट? इलीगल। तो किसी का भी इलीगल, हमारा हमारा पैसेज क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्टिव उसका इलीगल है, these agreements cannot be fulfilled as they consist of illegal elements। तो अगर वो illegal elements हैं उसके अंदर, तो which is like robbing the bank, ठीक है, आप जाके बैंक को चोरी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो void contract हो जाएगा, राइट? तो this would be void contract, that the answer is going to be A। Next is an agreement made by an adult but involving a minor child where the signatory is a minor child himself. This agreement would be invalid and enforceable agreement, avoidable agreement, avoid agreement, an agreement that cannot be enforced by the minor। फटाफट से मुझे आंसर दो। ये वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत आएंगे, बहुत 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 ज्यादा आएंगे माइनर के ऊपर। तो इसका आंसर सिंपल होता है, any agreements that are done with respect to minor are void agreements। You cannot have an agreement until unless there is a beneficiary involved, there is a trust involved। There's a trust involved, beneficiary involved, तो वो agreement would be enforceable, else it would be a void agreement at all। Which of the following scenarios would most likely result in a void agreement? An agreement signed by someone under duress, a contract with mutually agreed terms to sell a house, an agreement to pay 10 lakhs on getting a government job, a contract with a minor who understands the terms। बट ऑफकोर्स अगर हम ब्राइब दे रहे हैं तो दैट इज एन इलीगल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। फॉर श्योर व्हिच वुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी सी, कि हम ब्राइब कर रहे हैं किसी इंसान को विथ रिस्पेक्ट टू द सी। An agreement made without consideration is generally void or voidable agreement। वैलिड एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनफोर्सेबल होने के लिए हमारे पास 5 एसेंशियल्स होते हैं। वो 5 एसेंशियल्स आई वांट इन द चैट बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। बताओ। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन अ वॉइड एग्रीमेंट, मोस्ट लाइकली। हम कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, जिसको चीजें समझ आती हैं, जब भी हम जुवेनाइल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जुवेनाइल ऑफेंडर्स भी होते हैं, राइट? तो जुवेनाइल ऑफेंडर्स की भी कैटेगरीज डिसाइडेड है कि वेदर दे वर एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे वर डूइंग while they were committing the act, और क्या उनके पास बिल्कुल ही वो क्षमता ही नहीं थी वो चीजें सोचने की या वो चीजें समझने की। अगर उनके पास वो चीजें होती समझने की, तो फॉर श्योर दे वुड नॉट बी लायबल एज सच। बट अगर they had certain kind of energy with respect to them, they knew what they are doing, what they were not doing, तो उस वजह से yes, most likely to be result in the void agreement। तो क्या होगा? It would be agreement of 10 lakhs। On the face of it हमें लग रहा है कि भाई ये तो गलत है मामला, है ना? इसलिए बताओ फिफ्थ का आंसर फटाफट। इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी void agreement, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पांचों में से एक एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर पांचों एसेंशियल फुलफिल हो रहे होते और कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वी कुड हैव कंसिडर्ड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। When parties to a contract are under a mistake, so there are 5 major things जिसकी वजह से हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकते हैं कि those contracts are void contracts on the face of it, ठीक है? तो मिस्टेक इज वन ऑफ द थिंग्स। जैसे फ्रॉड होता है, ठीक है, मिस्टेक होता है, अंडर इन्फ्लुएंस होता है,
all cheating होता है, मतलब all these things are comes under the vicinity of void agreements. When parties to a contract are under mistake regarding an important fact related to such contract, it may affect the contract in two ways. It may firstly defeat the consent altogether that the parties are supposed to have given, that is to say, the consent is unreal. Two or more person, sorry, two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. ठीक है? तो इन्होंने फर्स्ट ये बोला कि इट में मिस्टेक क्या है, इट में अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन टू वेज. फर्स्ट वुड बी डिफीटिंग द कंसेंट ऑल टुगेदर दैट द पार्टीज आर सपोज टू हैव बीन गिवन, दैट इज टू द कंसेंट इज अनरियल. तो कंसेंट जो थी वो तो अनरियल हो गई. द सेकंड चीज, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट, तभी हम मानते हैं दैट इज फ्री कंसेंट जिसको बोलते हैं इफ दे अग्री इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. जैसे मैंने बोला, अगर मुझे एप्पल, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना था बी से, मैं ए हूँ और वो बी है, मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू सेल दिस एप्पल टू यू एट ₹10, and that person agrees कि आई विल टेक योर एप्पल विथ रिस्पेक्ट टू ₹10 एंड वो मुझे ₹10 दे रहा है, मैंने उसको एक एप्पल दे दिया है. दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हाँ वी वर एक्चुअली अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अगर मैं उसको बोलती नहीं यार, आई एम एक्चुअली सेलिंग द बनानास या ऑरेंजेस, और मेरे पास बनानास भी है, ऑरेंजेस भी है, और मेरे पास एप्पल्स भी हैं, एंड आई एम सेलिंग एप्पल्स फॉर ₹10, और उसको लगता कि अरे, और शी इज सेलिंग मी द ऑरेंजेस फॉर ₹10, तो वो कहीं ना कहीं वी आर नॉट अग्रीइंग इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, राइट? Secondly, the mistake may mislead the parties as to purpose which they have contemplated. तो उनका पर्पस जो था वो भी कॉन्टेम्पलेट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मिस्टेक. Where the mistake does not defeat consent but only misleads the parties, where both parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void. अगर दोनों पार्टीज के बीच में देयर मिस्टेक है कि विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स दे आर डिफरेंट, वो लोग लॉ के पीछे डिफरेंट नहीं थे, बट विद द फैक्ट्स की कुछ फैक्ट्स में ऊपर नीचे हो गए हैं, उसके वजह से दे आर एक्चुअली अंडर अ मिस्टेक, देन इट वुड बी void at all. ठीक है? However, if the mistake is concerning an anonymous opinion regarding value of the subject matter of the agreement, it is not a mistake as to the matter of fact. अगर वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही उनकी अग्रीमेंट नहीं है, तो वो तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हुआ. Thus, agreement is void when both the parties to agreement are mistaken. Their mistake is a matter of fact, and the fact above which they are mistaken is essential to the agreement. जिस भी चीज के पीछे they have the डिसएग्रीमेंट, वही अगर एक कोर पार्ट था हमारे एग्रीमेंट का, तो भी वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज अ void agreement. Further, it is pertinent to note that a mistake, in order to invalidate a contract, should be a mistake of fact and not a mistake of law. It should always be a mistake of fact, mistake of law नहीं होना चाहिए. उनको ये नहीं होना चाहिए कि भाई उनको लॉ के बारे में पता ही नहीं. ठीक है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि लेट्स गो एंड रॉब द बैंक. अब वो ये कल के दिन आके उठा के मुझे ये नहीं बोल सकते कि हमको पता ही नहीं था कि रॉबरी इज अ क्राइम. ठीक है? Furthermore, where only one party of the contract is under mistake of fact and the other party is not, the contract is not voidable merely for such reasons. अगर उनमें से एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे देयर मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी और अदर पार्टी इज नॉट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely for such reasons. ठीक है? Mr. A entered into an agreement to sell his bicycle, which had been kept unused in his attic for a year, to Mr. B at an agreed price. अब क्या था कि मिस्टर ए के पास एक बाइसिकल थी जो उन्होंने अटैक में रही थी 1 साल से. आप बी को बोले कि क्या आप ये मेरी बाइसिकल ले लो. However, neither party was unaware of that at the time of entering into the agreement. The bicycle had already been destroyed by a fire in the attic. ठीक है? तो क्या था कि हाउएवर किसी को पता नहीं था कि भाई वो तो जब उनके अटैक में आग लगी थी तो बाइसिकल भी जल गई. In the given situation, which of the following statement is true? The agreement is void as both parties were under a mistake as to matter of fact essential to the agreement. The agreement is void as both parties were under a mistake as to law in the enforce in India. And the agreement is not voidable as only one of the parties were under a mistake as to matter of fact. The agreement is not voidable as the promise made under the agreement had not been performed. जल्दी बताओ आंसर. टेल मी द आंसर.
क्योंकि दोनों ही एक बहुत इसेंशियल पार्ट, तीन उन्होंने हमको, जब हमने हमारा पैसेज पढ़ा था, they gave us three essential. Both the parties to the agreement are mistaken. दोनों parties to the agreement are mistaken here. नहीं, दोनों मिस्टेकन तो नहीं थे विथ रिस्पेक्ट टू, उनको उसको बाइसिकल बेचनी थी, उसको बाइसिकल खरीदनी थी. देयर मिस्टेक इज टू द मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर मिस्टेक थी नहीं, बट द फैक्ट अबाउट विच दे वर मिस्टेकन इज एसेंशियली द अग्रीमेंट. जो फैक्ट था उसके लिए दे वर मिस्टेकन क्योंकि वो तो जल गई. इट वाज इन द attic. तो व्हाट वुड बी आवर आंसर? The answer is going to be A. The agreement is void as both parties were under a mistake as to matter of fact essential to the agreement. Miss X and Miss Y entered into a contract of sale of an article. While reeling under the anonymous belief that the sale of the article, which was the subject matter of the agreement, was permitted by the law in force in India. In the given situation, with the following statement is true. क्या यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ था? The contract is valid. No. The contract is void is the option of Miss Y. No. The contract is void is the option of Miss Y. No. The contract is not voidable. What would be the answer? Why it would be A? जल्दी बताओ. Why would be it be A? सबने A लिखा है, हैरी ने D लिखा है. D क्यों? Tell me why it's D. Exactly. तो यहाँ पे mistake of law था which cannot be taken into consideration. Yes, that is the reason it is going to be what? Voidable. Okay. Okay. Next question. Mr. J entered into an agreement with Mr. K for the sale of Mr. J's club. At the time of entering into the agreement, while Mr. J believed that he was agreeing to sell his golf club, Mr. K believed that he was agreeing to buy a clubhouse owned by Mr. J. The agreement is void because the mistake of fact defeat the consent of the parties. Mistake of fact mislead the parties as to purpose of the contract. Mistake of fact was regarding the identity of the parties, both A and B. What would be the answer? The answer would be what? It's easy. Very easy question. Fatafat, give me the answer. The answer is going to be D. Both A and B with respect to same. So the last question of the class. Mr. D appointed Mr. K to manage the cultivation of his land. As he was unable to manage it himself due to his advanced age, Mr. K agreed to manage the cultivation of Mr. D land if he granted Mr. K a lease of the said land. Mr. D agreed to the same and signed a deed which was unknown to both parties, a gift deed of the land and not a lease deed. In the given situation, which of the following statement is true? Mr. K and Mr. D were reeling under a mistake as to matter of fact essential to the agreement. Mr. D and Mr. K were reeling under a mistake as to matter of law essential to the agreement. Mr. D was reeling under a mistake as to matter of fact essential to the agreement. Mr. D was reeling under a mistake as to matter of law essential to the agreement.
Here, when you see कि दोनों parties believed it to be a lease, but it was actually what? A gift deed था वो. So it was a mutual mistake of the fact. So yes, with respect to the nature of the document. So what will be the answer? The answer is going to be what? Correct. The answer would be Miss A, where Mr. D and K were reeling under a mistake is to matter of fact essential to the right. The answer is going to be A. I really hope you really liked the three of the questions that we did today, and all three were on the CLAT paper pattern itself. And we will be doing more such questions in coming classes. So stay tuned and like the channel, subscribe the channel, tell your friends to subscribe it क्योंकि हम हर दिन 5:30 बजे आपके लिए एक बहुत अच्छा सेशन लेके आ रहे हैं with respect to the question series. ठीक है, चलो, bye bye, take care.